लगता है? Do you guys believe in love at first sight? यस Yes? यस हुआ है आपके साथ? हाँ तभी तो यस बोल रही हूँ. You don't agree? No, I don't. I mean, I agree with her. Whatever works for. But for me, love at first sight पहले होता था. एक ही बार हुआ है कॉलेज में, and then not after that. वैसे लड़के अपना पहला प्यार नहीं भूलते हैं ना. A lot of times people reference लड़के? their लड़के first. अपना लड़कियां कौन भी सा भी नहीं वाला भूलती. प्यार नहीं भूलते हैं. I think सभी याद रहता है. I think लड़कों का एक रोस्टर चलता रहता है दिमाग में कि इस मोमेंट में वो वाला याद आ गया, इस मोमेंट में ये वाला याद आ गया. नहीं वो ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं. अब नहीं होता. अब क्या देख के प्यार होता है? अब इंसान देख के प्यार होता है और टाइम लेता हूँ और yeah, I take my time. I take my sweet time and just to hang out with the person, understand the company, how you're feeling together, sharing your dreams, sharing your aspirations, and yeah, and that's how like you eventually. It takes me time now to kind of fall in love. So and it has happened over a period of time. Like initially, love at first sight. वो घूमी और like हाय यार खत्म. फिर थोड़ा फिर वो हो के फिर 2-3 महीने हो गए. फिर जैसे जैसे और हुआ तो फिर 6 महीने हो गए. फिर जैसे जैसे हुआ तो 1 साल हो गया. अब तो मुझे लगता है 2 साल तो कम से कम मुझे लगेगा किसी से. अब मैं पूरी तरह से जान जाना चाहता हूँ, बोर हो जाना चाहता हूँ उस इंसान से, और उसके बाद भी अगर मुझे मन हो उसके साथ रहने का तब लगता है कि असली प्यार है. Is it because you want to protect yourself No, from is the it? hurt? It's because the butterflies in your tummies are quite deceptive, I feel. You always chase the idea of love, I feel, and that can actually, you're so excited. Your honeymoon phase is going on, the butterflies in your tummy, and that in that zone you might overlook a lot of things which you might have to face in the future. I don't mind the butterflies, let that be, but just take it slow. I feel if you want to, and for me, love is going to be forever. Whoever I want to be with, I want to be forever. It's never going to be like with an end date. So I want to take my own sweet time to discover each other, unwrap each other bit by bit, and then eventually, once the honeymoon phase fades away, you have spent enough time, you have traveled, you have gotten bored, you kind of almost like despise each other, and even after that, if you're like together and you still feel like I can't stay without this person, I think that is true love. For me, love has now transformed into companionship. Unlike the other, Yeah. पहले था कि गर्लफ्रेंड चाहिए, अब वो नहीं है. Like you need a companion who can